Hello everyone. As we are now inching closer towards the end of this year, I am Gaurav Gupta and I am bringing forward in front of you yet another session for all the students who are preparing for IPMAT 2026. So friends, second last of the day of the year, 30th of December we already are sitting on, and December खत्म होने वाला है, next year start होने वाला है. And yes, थोड़ी सी anxiety बढ़ जाएगी because when you are sitting in 2025 and preparing for exam in 2026, तो ऐसा लगता है ना यार कि एग्जाम नेक्स्ट ईयर है. आज से 2 दिन बाद आपको ये लगने लग जाएगा कि अब तो हमारा एग्जाम इसी ईयर है. वी आर लेफ्ट विद अ फ्यू मंथ्स एंड ये मंथ्स एक एक करके खत्म होते रहेंगे, एक एक करके दिन खत्म होता रहेगा, एंड यू विल बी सिटिंग वेरी क्लोजर टू योर एक्चुअल एग्जामिनेशन. So friends, a very good evening to all of you. So let me see who all are here. So सबसे पहले एक बार यार कंफर्म कर दो कि मेरी आवाज क्लियरली पहुंच पा रही है आप तक या फिर नहीं, so that we can quickly start this session. So friends, am I clearly visible and audible to each and every one of you? सर IPMAT वाला के मॉक्स का लेवल बहुत कम लग रहा है. दैट इज नॉट IPMAT इंदौर लेवल. ईशान, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. अगर मैं लास्ट ईयर मॉक्स की बात करता हूं, सो द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज आई वुड से वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन. अभी जैसे जैसे आप एग्जाम के पास जाते रहोगे, ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज होता रहेगा IPMAT इंदौर के लेवल से. ऑलराइट, ओके. तनुश्री, थैंक यू. किशन, संकेत एंड everyone else, those who have confirmed that I'm clearly visible and audible. So friends, let's talk about this series of sessions, IPMAT Essentials 2026. So previously इस series में मैं already 3 sessions ले चुका हूं. Clocks, calendars, ये 2 important sessions हो चुके हैं, and one of the sessions was on directions. So these 3 sessions I have already conducted in this series, and I would say that जो भी हमने 3 सेशंस देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे, all the topics that we have covered in these 3 sessions were very important. Now today what do we have for all of you? आज क्या सेशन होगा, आज क्या टॉपिक होगा? Let's quickly reveal that. So I have picked up a topic. I would say that not only that particular topic is important, but there are other type of question that comes using the similar kind of logic that I'll be teaching you in today's topic. ठीक है? Now topic का नाम क्या है? Series. The questions on series. So today we are going to cover up the basic concepts on series. अब series ये बहुत ही wide topic है, बहुत बड़ा topic है. So आज की क्लास में मैं सारी चीजें नहीं कवर करूंगा. I'll be just giving you a basic start. जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है एंड दे आर लुकिंग फॉर a start, logical reasoning section हम start कैसे कर सकें. So this session will be important for those students, right? So today we'll be talking about one element of the basic concepts of series, and we'll look at different type of questions based on that particular portion of series. अब जैसा मैंने आपको बोला अभी कि सीरीज का जो टॉपिक है, ऑब्वियसली सीरीज के टॉपिक से सीरीज के डायरेक्ट क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना, राइट? अब सीरीज में जो आप कंसेप्ट्स सीखोगे, सिमिलर कंसेप्ट्स विल बी हेल्पफुल इन द टॉपिक ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, इन द टॉपिक ऑफ एनालॉजीज, इन द टॉपिक ऑफ ऑड वन आउट, ठीक है? तो सीरीज का जो कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, this is a standalone concept but will be applicable to different type of questions. तो समझ लो एक ये फाउंडेशन स्टोन है आपकी और बहुत सारी चीजों के लिए जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, राइट? So please take a DI class because it also came in IIM इंदौर एग्जाम. अरे डेफिनेटली संकेत, अभी IIM इंदौर का एग्जाम्स मिनिमम 4 मंथ्स है हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग सेशंस ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना? बट ये सीरीज तो कंप्लीट करनी है. जो टॉपिक्स हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किए थे वो टॉपिक्स करेंगे, एंड आई प्रॉमिस यू दैट इन द नेक्स्ट सीरीज मैं डेटा इंटरप्रिटेशन से 1-2 सेशंस मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, ठीक है? सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सीरीज. Now, if I'll have to divide the questions of series, or if I have to look at the different types of questions that we may find in series,
तो जनरली सीरीज में दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. नंबर वन इज नंबर सीरीज and number two is alphabetical series. राइट? अब आप लोग बोलोगे यार नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, इनके अलावा भी और क्वेश्चंस आते हैं. यस, डेफिनेटली आपको इनके अलावा भी क्वेश्चंस मिलेंगे एंड दैट दोस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सीरीज इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. ठीक है ना? सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक अलग टाइप की सीरीज नहीं है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. नंबर सीरीज आपको समझ में आता है, अल्फाबेटिकल सीरीज आपको समझ में आता है. तो अगर ये दोनों चीजें इंडिविजुअली आपको समझ में आती हैं, देन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मींस अल्फाबेट भी होगा एंड नंबर भी प्रेजेंट होगा. राइट? नाउ out of these two types of series that you can see on your screen, number series and alphabet series, number series is the most important thing. अगर नंबर सीरीज समझ में आती है आपको, if you are able to understand each and every logic, each and every concept that is used to solve the questions of number series, similar concepts, similar type of questions you will find in alphabet series. जस्ट डिफरेंस क्या होता है, नंबर सीरीज में जो भी नंबर्स हैं उनको हम अल्फाबेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द टॉपिक ऑफ सीरीज इज the concepts and the type of questions that will be present in number series, right? So let's begin with the topic number series. Let's begin with the things that you need to know, a student must know to solve almost every question of number series, right? So must remember things for number series. So this is the first thing that I'm going to tell you in the next 10 minutes. किस-किस टाइप की चीजें, किस-किस टाइप के numbers हमें पता होने चाहिए, right? So let's talk about the basic concepts that are required, must for a student to know in number series. ठीक है? Now students who have already done number series, भाई जिसने भी number series already किया हुआ है, जिसको थोड़ी सी भी information है number series के बारे में, कैन यू टेल मी, अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स की बात करें, जो आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी पढ़ा होगा, तो व्हाट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इन द क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज? कम ऑन, राइट इट इन द चैट बॉक्स, एवरीवन. Yes, I'm waiting for your messages. Even, odd, prime, composite. The first reply from Sanket. Okay, so Sanket, I'll write them one by one. So first of all, even numbers and odd numbers. Right? So do we know what are even numbers? What are odd numbers? Even numbers, the numbers which are completely divisible by 2. All right? So for example, even number का अगर मैं example लेता हूँ, so 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. Odd number का example 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. Right? So these are even numbers and odd numbers. तो ये पता होना चाहिए even number कौन सा होता है, odd number कौन सा होता है. Now moving forward, the second type of numbers which one of the students has mentioned, संकेत ने mention किया है, right? So जगत इंटीजर्स इतना हमें नहीं, जरूरत नहीं है पता होने की. इंटीजर्स वैसे तो पता होना चाहिए ऑब्वियसली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बट यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पे लिख रहा हूं. ठीक है? सो नेक्स्ट थिंग इज प्राइम नंबर्स. नाउ व्हाट आर प्राइम नंबर्स? अब डेफिनेशन वगैरह नहीं पता हो तो भी चलेगा, ठीक है, बट पता हो तो ज्यादा अच्छा है. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स. दो फैक्टर्स होने चाहिए. ठीक है? सो आई एम राइटिंग सम प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. प्राइम नंबर्स. ठीक है? अब क्वांट में ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स पढ़ा होगा, बचपन में आपने प्राइम नंबर्स पढ़ा होगा, तो प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए अप टिल 100 तक. 100 तक के प्राइम नंबर्स आपको टिप्स पे होने चाहिए. ठीक है?
Now the third thing that you need to know is composite numbers. Now composite numbers जितना प्राइम नंबर्स इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि एक नंबर गिवन है आपके सामने, ये नंबर प्राइम नंबर है या फिर ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, तो वी शुड बी एबल टू डिटरमाइन दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. हमें ना कॉम्पोजिट नंबर्स की गलत डेफिनेशन पता होती है, हम सोचते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कॉम्पोजिट होता है. ठीक है, ये डेफिनेशन पार्शियली करेक्ट है, बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर इज द नंबर्स विच हैव मोर देन 3 फैक्टर्स. ओके, ठीक है. तो अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो वहां पे अच्छे से समझ में आएगी ये डेफिनेशन. हियर आई जस्ट नीड टू राइट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स. सो 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 and so on. ठीक है, so these are composite numbers. Done. So even and odd numbers, prime numbers and composite numbers, this is the first set of numbers that you need to remember. Now moving ahead, the next set of numbers that you need to remember is perfect squares. So जल्दी से बता दो परफेक्ट स्क्वेयर्स कहां तक याद हैं? 10 तक के स्क्वेयर्स याद हैं, 15 तक के स्क्वेयर्स याद हैं, 20, 25, 30 कहां तक के स्क्वेयर्स आप लोगों को याद हैं? देन आई टेल यू माय रिक्वायरमेंट कि भाई कहां तक के स्क्वेयर्स याद होने चाहिए. सो परफेक्ट स्क्वेयर्स आप लोगों को कहां तक के याद हैं? ऑलराइट, 1 से लेके 30 सेज संकेत. 30, वेरी गुड. So most of you know the perfect squares up till 30. So requirement भी 30 तक रख देते हैं. ठीक है, so you need to remember the squares, the perfect squares up till 30. 30 तक के numbers के squares हमें पता होने चाहिए. The next thing is perfect cubes. अब perfect cubes अगर 15 तक के याद हैं, this is fine, this is wonderful. अगर हो सकता है तो 20 तक के परफेक्ट क्यूब्स, टिल 20 परफेक्ट क्यूब्स याद कर लो. 15 तक याद है तो भी चलेगा, जिसको 15 तक याद है तो अब इसको इंक्रीज करने की कोशिश करो अपनी रेंज, एंड इंक्रीज योर रेंज अप टिल 20. अदरवाइज 15 इज एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है. सो बट 4 हैज ओनली 3 फैक्टर्स, नॉट मोर. अरे यार, मैंने क्या बोला? आई थिंक शायद मैंने गलत बोल दिया होगा. कॉम्पोजिट नंबर्स में दोबारा से मेंशन कर देता हूं, मोर देन 2 फैक्टर्स. सो दैट माइट बी अ स्लिप ऑफ टंग, जगत. तो शायद मैंने गलत बोल दिया होगा, आई डोंट रिमेंबर. सो composite numbers are those numbers which have more than 2 factors, right? Prime numbers are those numbers which have exactly 2 factors. All right, Jagat. So prime numbers will have 2 factors. Composite numbers will have more than 2 factors. Okay. So 4 के factors क्या हैं? 1, 2 and 4. 4 has 3 factors. Number of factors is more than 2, and hence 4 is a composite number. Okay. All right. Now let's move on, and up till now we have seen कि सीरीज के क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए हमें किस किस टाइप के नंबर्स याद रखने जरूरी हैं. All right. Now let's have a look at the type of questions, the different type of questions that we may find in number series. क्या क्या लॉजिक यूज होता है, क्या क्या कंसेप्ट यूज होता है in the questions of number series. Now the first and the very common logic that is used is, or the type of series that we have is addition series. Now I'll give you different examples of addition series. So addition series में क्या होगा? A series of numbers will be added to the previous term to generate the next term. So if any number is given, some number, either same number or different numbers, will be added to the previous term to generate the next term. For example, let's consider a series. So let's say 3, 7, 11, 15, 19. What will be the next number in this series? Come on, tell me, all of you.
What will be the next number in this series? Everyone, come on. 3, 7, 11, 15, 19. What will be the next number in this series? Absolutely correct. Good. The next number in this series will be 23. Now what is happening here? So 3 में मैंने 4 ऐड किया, I'll obtain 7. 7 में दोबारा से +4 किया, again 11 plus 4 is 15, 15 plus 4 is 19. So what is happening? A same number is being added to the previous term to generate the next term. अब ये जो same number add कर रहे हैं, ये क्या number है? ये 4 है. तो हर बार 4 4 4 4 add होता जा रहा है. So 19 plus 4 should be 23. So 23 will be the next term in this series. Now let's take another example. 3, 4, 6, 9, 13, 18. What will be the next number? What will be the next number in this case? 3, 4, 6, 9, 13, and then 18. After 18, what will be the next number in this series? All right. Perfect. So अब यहां पे क्या हुआ? पहले मैंने क्या किया? +1 किया. 3 plus 1 is 4. Then 4 plus 2 is 6. 6 plus 3, 9 plus 4, 13 plus 5. Now different numbers are being added to the previous terms to generate the next term. अब ये जो different number जो add हो रहे हैं, these numbers are forming a type of series. So 1, 2, 3, 4, 5 क्या ऐड हुआ है? पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, 4 and then 5. अब कितना ऐड होना चाहिए? 6 should be added to 18 and the number 24 will be the next term of this series. ठीक है? Let's take one more example. 3, 4, 8, 17, 33. What will be the next term in this series? I'll repeat. 3, 4, 8, 17, 33. What should be the next number of this series? All right, Sanket, good. Mr. Z, you are asking about any new batch launching for IPMAT 2026? Yes, I suppose in the first or second week of January, probably will be launching a new batch, right? If you know some basics, you want to start your preparation, the batch that we are going to start in the month of January, first week or second week of January may start ho jayega, somewhere around 10th of January. Okay, so you can wait for a few days and yes, you will get to have a new batch. All right, so let's look at the logic behind this. Now 3 and 4 may difference is 1. Then the difference is 4. The difference is 9. The difference is 16. Now look at these numbers. What is happening here? 1, 4, 9 and 16. These 4 numbers, they are forming a series of perfect squares. 1 square, 2 square, 3 square and then 4 square. So now the next difference should be 5 square, that is 25. So 33 में 25 add कर देंगे and our answer will be 33 plus 25, that is 58. So 58 will be the answer. अब एक चीज ऑब्जर्व की आपने, यहां पे ये जो नंबर्स हैं, दे आर फॉर्मिंग अ सीरीज एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज कैन बी ऑफ एनी टाइप. ये प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं, ये कॉम्पोजिट नंबर्स हो सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब्स हो सकते हैं. देयर मे बी ऑल्टरनेट सीरीज एज वेल. जैसे यहां पे 1 is 1 square, then 2 cube, then 3 square, 4 cube, 5 square, 6 cube and so on, right?
So it's your practice as well as developing your observation skills that will help you in, first of all, finding the answer, and then it will help you in finding the answer quickly. ठीक है ना? तो प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं while you are solving these type of questions in the exam. ठीक है? Now the next type is multiplication series. Now before I switch on to multiplication series, यहां पे addition series लिखा है. So don't think कि हर बार कोई ना कोई नंबर ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है. So addition और subtraction series. ठीक है? Adding a negative number means subtraction. ठीक है? So जब मैं यहां पे addition लिख रहा हूं, so it may be addition और subtraction series. Numbers add हो रहे हैं, numbers subtract भी हो सकते हैं, right? Similarly, multiplication और division series. So number multiply हो रहा है, number divide भी हो सकता है. Now, multiplication or division series is no different from addition series. The way number was being added to the previous term to generate the next term, जिस तरीके से यहाँ पे numbers add हो रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे numbers multiply हो सकते हैं. ठीक है? अब एडिशन में तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स आपको मिलते हैं, इनके बीच का गैप आपको आइडेंटिफाई करना है. मल्टीप्लिकेशंस में कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. ओके, राइट? ऑब्वियसली एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशंस आता है. मल्टीप्लिकेशन, व्हेन वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशंस इंस्टेड ऑफ एडिशंस, सो ऑब्वियसली कैलकुलेशन स्किल्स थोड़ी सी और हमें इंप्रूव करनी पड़ती है. ठीक है? सो इन every sense I would say that multiplication series and addition series are similar. बस यहां पे क्या होगा, multiply हो जाएगा addition की जगह. Now the most important thing that comes here is the combination of addition and multiplication series. इन दोनों का combination. Okay, so the third type is addition and multiplication series in combination with each other, or we call it as miscellaneous series. ठीक है? तो यहां पे क्या हो सकता है, लॉजिक. सो मैं आपको लॉजिक बताता हूं. तो लेट्स से 7 इज द फर्स्ट टर्म. 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1. सो 7 into 2 14, 14 plus 1 is 15. So let's say the next term is 15. Again 15 into 2 plus 1. So 15 into 2 is 30, 30 plus 1 is 31. Next term 31 multiply 2 plus 1. So multiply 2 plus 1, multiply 2 plus 1, and so on. It is happening across this entire series. So this is the combination of multiplication and addition, right? अब यहां पे level of difficulty थोड़ा सा increase हो सकता है. They may give you alternate logics. Alternate logics का मतलब क्या है? Let's say पहले हुआ multiply 2 plus 3, followed by multiply 3 plus 2. Then multiply 2 plus 3, multiply 3 plus 2, and so on, right? So this may also happen when the level of difficulty goes at a little higher level. All right, ठीक है? Perfect. So these are different type of cases that we may see in number series. अब जल्दी से कुछ questions करते हैं, and let's see if we have understood whatever I've been explaining you since last 15-20 minutes. Okay, so have a look at this question and try to identify the answer of this question. Jagat, I have already communicated the problem that we were facing. ठीक है? So I believe 1-2 दिन में वो problem resolve हो जाएगी. So on your screen is the question. Quickly identify the answer for this one. And with your answer, I would prefer if I would be happy if you'll write the logic as well. ठीक है? तो जो भी लॉजिक यहां पे यूज हो रहा है, अपने आंसर के सामने उस लॉजिक को लिख दो. All right, Sanket, very good. Perfect. So the logic that is used here.
So first of all, the difference between these two numbers is 2. Then the difference is 3. Then the difference is 5, and then it is 7. Now 2, 3, 5 and 7. What are these numbers? These numbers are prime numbers. All right. So next prime number 7 के बाद next prime number क्या आता है? 11. So my answer should be 27 plus 11, that is 38. So 38, that is option D. Option D is the correct answer of this question. Okay. So prime numbers, yes, you are absolutely correct. Next question on your screen. संकेत, yes, if it would have been, तो सीरीज क्या बन जाता? 1 3 5 7 9. ठीक है ना? तो it would be a series of odd numbers in that case. हाँ जी. What is the answer for this one? So numbers are 10, 14, 30, 66, 130. अगेन लॉजिक यार, मेरे को आंसर से ज्यादा लॉजिक में इंटरेस्ट है. तो अगर आप मुझे लॉजिक बताओगे देन इट वुड प्रोबेबली मेक सेंस. So 230 is the answer that is given by 2 students. Okay. So again, we are looking at the difference between the consecutive terms. So the difference here is 4. The next difference is 16. Next it is 36, and then it is 64. So I'll write these numbers. ये जो difference है ना, इनको लिख देता हूं मैं. 4, 16, 36 and 64. Now what is 4? 4 is the square of 2. Then this is square of 4, square of 6, square of 8. So these are the squares of prime numbers. So prime numbers के squares, next square क्या आना चाहिए? 10. 10 square which is 100. तो अब क्या करना है? 130 में 100 add करना है. So my answer will be 130 plus 100, that is 230. So 230, which is option B. Option B is the correct answer. That's wonderful. Great. Next question की तरफ चलते हैं. So next, 10, 11, 38, 163, and then 506. Again, an easy question in front of you. Doable question है. जगत बोल सकते हैं multiples of 4. ठीक है, 4, 16, 36, 64. So this is the first multiple of 4. 4 into 1, 4 into 4, 4 into 9, 4 into 16. ऐसा बोल सकते हैं. तो 1, 4, 9 and 16 ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. तो यहां पे आ जाएगा 4 into 25. राइट? ठीक है, आंसर वही आना है. बट द बेटर वे टू आइडेंटिफाई दीज नंबर्स इज द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स. वो थोड़ा बेटर तरीका है. ओके. राव साहिब, आंसर चाहिए यार, मेरे को आंसर चाहिए. सो व्हाट
will be the answer among the 4 options which are given to you. Options में से आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? आंसर के सामने लॉजिक लिखो. So first of all answer and then your logic, the supporting logic. So square होगा, cube होगा, what will be the logic? So once again let's write the differences. So यहाँ पे difference है 1. Next difference is 27. Now looking at 1, you will not be able to identify कि logic क्या है. But 1 के बाद 27 देखोगे ना तो थोड़ी सी clarity आएगी. Now in case you still don't have any clarity, write the next difference. What is the next difference? 138 से 163. So the next difference is 125. Right? It will click something in your mind. Now if you write the next difference and you remember these numbers जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, तो आपको एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाएगी. राइट? सो 163 से 506 पे जा रहे हैं अगर हम, तो यहां पे कितना हुआ? So 343 का डिफरेंस. So the numbers in front of us are 127, 125 and 343. Now what are these numbers? जिसको भी perfect squares या perfect cubes याद हैं, they will be able to remember these numbers. Now this is 3 cube. This one is 5 cube. This one is 7 cube. And 1 को आप 1 cube अब लिख सकते हो. So 1 cube. So 1 cube, 3 cube, 5 cube, 7 cube. What are these numbers? These are the perfect cubes of odd numbers. So odd numbers का cube है. Next आ जाना चाहिए 9 cube. 9 cube कितना होता है? 729. तो 729 ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 506 plus 729. So 506 plus 729, 1234. Sorry, 1235. So 1235, which is option C, will be the correct answer. ठीक है? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Now try and identify the logic. Logic find out करो. All right, Sanket has given an answer. Again, Sanket, something is missing in your answer. You know what is missing. तो मुझे क्या चाहिए आंसर के साथ साथ? I need the logic as well. Sanget, you are saying that the difference is a square of prime number. मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा यार. I cannot identify the difference as the square of prime numbers. No. So किशन, मेरे को लॉजिक चाहिए. चलिए. So first of all, the difference here 20 से 43 पे गए तो difference is of 23. ठीक है? Then 43 से 70 पे गए, the difference is
27, 27 is being added. Then 70 से 106 पे जाने के लिए 36 is added, and then 61 is added, right? So 23, 27, 36, 61. कुछ लॉजिक तो नहीं बना यार. No logic, nothing. Okay, so Jagat says 2x plus 1. So Jagat, 2x plus 1. 2x plus 1. थोड़ा सा logic बताओ. Sir, I mean the difference is 4, 9, 25, and next difference is and then next 49 plus 61 equals 110. संकेत अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया आपने क्या बोला. I mean the difference is 4, 9, 25, and then next is 49 plus 61. Okay, so संकेत, let's see क्या आप बोलना चाह रहे हो. तो you are telling me कि अब ये जो differences आए हैं 23, 27, 36, 61. So ये वाला जो difference है, this is 4. This difference is 9. Now what about this difference? 36 से 61. So this difference seems to be 25. ये वाला difference जो है वो 25 है. ठीक है? हाँ? Now I understand what you are trying to say. Now 4 is 2 square. 9 is 3 square. This is 5 square. Okay? Now 2, 3 and 5 are prime numbers. So यहाँ पे square किसका होना चाहिए? 7. The next prime number. That means 49. Right? Now 61 plus 49 is 110. So here the next difference should be 110. Right? तो आंसर क्या हो जाएगा? 167 plus 110, that is 277. So 277 should be the correct answer of this question. So now this question was of the second level differences. So अभी तक हम difference सिर्फ first level तक check करते थे. Now we are going to check the difference of the differences. So first level पे इन सब numbers के difference calculate किए 23, 27, 36 and 61. अब 23, 27, 36 and 61 इनके आपस में differences check किए. So here the difference is 4, 9, 25. Now what are 4, 9 and 25? These are the squares of prime numbers. Okay, right? So these are the squares of prime numbers. So next prime number is 7. 7 ka square 49. So 61 plus 49, 110 will become the difference between our last term and the required term. And that is how we can calculate the answer for this. All right. Now let's move on and look at one last question of the day. Last question of the day, and then we will stop. Okay. So have a look at this and try to identify the logic. This is something different. This is something different. So let me see if you are able to find out the answer. Otherwise, I'll give you a hint after 1 minute. So the numbers are 20, 10, 10, 15, 30, 75. And you will have to find out the next term. And the logic. All right, nice, wonderful. Any one of you quickly give me the logic behind this, and then I'll be satisfied. I'll be happy.
Absolutely correct. Now, first of all, the first term 20 is multiplied by 0.5. That means half. Half से multiply कर दिया. So it gives me 10. Then the resulting term 10 is multiplied by 1. The next term is 10. Then multiplied by 1.5 will give me 15. Then 15 multiplied by 2. So मैं multiply किससे कर रहा हूं? पहले 0.5, then 1, then 1.5 and then 2. So 15 into 2 is 30, which I have here. Next 30 को किससे multiply करेंगे? 0.5, 1, 1.5, 2. The next term in series will be 2.5. So 30 multiplied by 2.5 will give me 75. And hence, to find out the answer, I'll multiply 75 by 3. The answer will be 225. Right? So 225 is the correct answer of this one. Sir, इस टॉपिक का नाम क्या था? So, इस टॉपिक का क्या नाम था? दोस्त, स्टार्टिंग से देखो, सब समझ में आ जाएगा. ठीक है? ओके. So friends, that's all about this class. ठीक है? So आज यहीं पे ही रुकते हैं हम. And I have attached one question for you as a part of homework. ठीक है? तो ये PPT आप डाउनलोड करना and you can solve that question by yourself. Now, today we have covered the most important element of series, the number series, and the logics behind solving the questions of number series. Now, similar logics will be applied in alphabetical series, and hence combination of number and alphabetical series will turn the questions into the questions of alphanumeric series, right? So, आज यहीं पे ही रुकते हैं with the basics of series, and we'll continue today's class with the concepts of alphabetical series as well as alphanumerical series. Now, that's all from my side, and I end this lecture with a promise that in the next series, we'll be having the concepts or the lectures on data interpretation as well, as requested by some of you. All right? So that's all from my side. And I end this lecture wishing all of you a very, very happy new year, a very, very happy 2026 to all the aspirants of IPMAT. All the very best. Bye-bye.